Students, here for exercise 14.3 बच्चे, today we will do the question number 3. Let us see. Given below are the seats won by different political parties in polling outcome of a state assembly elections. ठीक है, so there is a data of political parties. ठीक है, so जिन्नियां seats won कीतियां parties ने बेटा, ठीक है, that is given. Political parties are given from A to F, A, B, C, D, E and F. So these are the number of seats won by the respective parties. So let us see what we have to do. Draw a bar graph to represent the polling results. So we have to draw bar graph for this. Second one is which political party won the maximum number of seats. So from the bar graph we will find this solution. First of all we will draw the bar graph. So let us draw the bar graph. So here you can see बच्चे, I have a graph paper. ठीक है, on a graph paper I have drawn a y axis and I have drawn an x axis. X axis draw की है बेटा, here is the origin O and on y axis I have written the seats won. ठीक है, and on the x axis I have written the political parties. देखो बच्चे, इस डाटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ x axis ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੇਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ y axis ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਔਨ y axis. ਸੀਟਸ ਵੋਨ ਇਹ ਅਸੀਂ y axis ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਐਂਡ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 75. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦ ਥਿੰਗਸ. ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ. ਠੀਕ ਹੈ, सो लेट अस मेंशन हेयर द स्केल. देखो ज़रा सी किस तरह लिखना है. वी विल राइट हेयर 10 देन 20, 10 का गैप ले लेंगे बच्चे. देन वी विल राइट हेयर 30 देन 40 देन 50 60 70 एंड वी विल मेंशन हेयर 80. ठीक है, सो सीट्स वोन वी हैव टेकन विद द गैप ऑफ 10 हेयर. ठीक है, नाउ विच इज़ द फर्स्ट थिंग हेयर. द फर्स्ट थिंग इज़ political party A with seats 75. So let us draw here. We will leave the first box. In the second box we will write political party A. Let us write it leaving the box with B here, then leave one box C, then leaving this D, then leave this E, then leave this F. ठीक है, so let us draw the bars. For A we have the 75 seats, so here is 70, here is 80, in the middle we will have 75. So we will reach here. ਇੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡਰਾ ਦ ਬਾਰ ਫॉर ਇਟ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, now let us shade it. सो बच्चे ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ 75. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ. ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ B with 55 seats. Seats are 55. ठीक है, so for this B we have the seats 55. Here is 50, here is 60. Between these there here is 55. So बच्चे for B we have to reach here. ठीक है, so let us draw its sides. So this is the bar we have to write here 55. The next one for the C ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37 ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, so we will write here 37. देखो here is 35. ठीक है, ਇੱਥੇ तक 35 है बेटे. Then the next one small one is 36 37. ठीक है, so here we will move for C. Here is 37. So we will draw the sides of this bar. You can shade these also अगर तुसी shade करना है बेटे. ठीक है, so this is 37. For D we have 29. So let us draw for D we have 29. जो इतने 30 है बेटा, 30 तो एक नीचे सिर्फ. ठीक है, one line below 30, one line below 30. This is 29. So let us mention it here. So this is 29.
ठीक है. नाउ फॉर ई इट इज़ 10. ठीक है बच्चे. सो ई, दिस इज़ ई ਦੇ ਲਈ 10 है. सो हेयर वी हैव टू मेंशन अप टू 10. सो दिस इज़ फॉर 10. ठीक है. देन फॉर एफ इट इज़ 37. इट इज़ 37. हेयर इज़ एफ 30. 35 है बच्चे. ठीक है. 35 है बेटा. देन 1 इज़ 30. सॉरी, हेयर वी हैव टू मूव. एफ ਦੇ ਲਈ ड्रॉ करना है बेटा. ई ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ चुका है. हेयर इज़ 35, 36, 37. सो हेयर वी हैव टू ड्रॉ. ठीक है. दिस थिंग. सो हेयर इज़ 37. सो नाउ वी हैव टू राइट द स्केल ऑल्सो. ਅਸੀਂ स्केल भी मैंशन कर दिए बच्चे. स्केल मैंशन करना है बेटे. 1 यूनिट इक्वल्स टू. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ. 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ. 10 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ. then here also, here also, here also. so that means each unit, 1 unit is equal to 10 seeds. ठीक है. so 1 unit is equal to 10 seeds. ठीक है बेटा. so this is the bar graph. हाँ जी बेटा. सो नेक्स्ट आवर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट इज़ विच पोलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. मैक्सिमम मीन्स सब तो ज़्यादा. ठीक है. सो हेयर वी कैन सी जो बार सब तो बड़ी बार है बेटा, सब तो लार्जेस्ट बार ए पार्टी दी है. ठीक है. सो दैट मीन्स द पोलिटिकल पार्टी ए वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. सो वी कैन राइट हेयर पार्ट 2 इज़ द आंसर. लिख सकते हैं हम. पार्टी ए, political party A won maximum seats. Maximum seats. ठीक है बच्चे. so do this in your notebook.